Hello viewers, the question is use Lenz law to determine the direction of induced current in the situations described by figure. Part A wire of irregular shape turning into a circular shape. Part B, a circular loop being deformed into a narrow straight wire. So the problem is based on the topic Lenz law, the application of Lenz law. In this particular problem, there are two situations. In the first part, there is some irregular shape. This is the irregular shape A, B, C, D. And this particular wired shape is pulled in such a manner so as to make it a circle. So from irregular shape, it is stretched to make a circle. And we have to find out the current, the induced current in this particular wire. Now, if you see the situation, this particular irregular section is creating some area. It's having some area. Now, as you have seen in this particular figure, there are cross signs. It means that the direction of the magnetic field is into the plane of the board. So this is the direction of the magnetic field, that is into the plane of the board. When we stretch this wire to make it as a circle, then we are increasing the area of this particular loop. And if we are increasing the area of this loop, we are increasing the magnetic field going through this loop into the paper, into the plane of the board. So the flux is increasing in the direction into the plane of the board. Now, the direction of induced current should be such that so as to oppose this increase in flux. It means that the direction of current should be like this. The direction of current should be like this, from A to D, D to C, C to B, and B to A. Because from the right hand thumb rule, if you curl your fingers along the direction of the induced current, then the thumb will give you the direction of the magnetic field. So if this is the induced current, the magnetic field due to this induced current is coming out of the plane of the board, which basically opposes the increase in the flux by increasing the area. So I am summarizing it. When we increase the area by making this irregular shape into a circular shape, what we are increasing? We are increasing the flux into the plane of the board. So the induced current should be in such a direction that so as to oppose this increase in the flux. So it means that the direction should be anti-clockwise, because when it is anti-clockwise, the direction of field due to this induced current is opposite to the increase which is into the plane of the board. So direction of induced current is coming, it is creating a field which opposes the increase in flux. So this is the direction for the first case, anti-clockwise direction. I am summarizing it in Hindi. So ये पहला केस ये दिया हुआ है. इस पहले केस में हमसे पूछी गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो यहाँ पे एक इरेगुलर शेप का वायर है जिसको प्लेस किया एक मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है. तो हमें जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, तो उस केस में जो फ्लक्स लाइंस हैं, जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं, वो बढ़ जाएंगे इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जो पास हो रहा है, अगर इसको एरिया को बढ़ा दिया जाता है तो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इंक्रीज कर जाएगा. लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि उस बढ़े हुए फ्लक्स को अपोज करे. इसका मतलब इंड्यूस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि बाहर की तरफ हो. तो बाहर की तरफ तभी पॉसिबल है जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, अगर हम अपने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, तो थंब की डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बताती है. तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, जो कि अपोज करेगा उस बढ़े हुए फील्ड को जो कि हमने क्रिएट किया था इसको सर्कुलर शेप में बनाने की वजह से. तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका पहले पार्ट का आंसर. दूसरे पार्ट में जो कॉइल दी गई है उसको प्लेस किया गया एक मैग्नेटिक फील्ड में. इन द सेकंड पार्ट दिस देयर इज अ सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, and these dots shows that the magnetic field is outward with respect to the plane of the board. It is coming out from the plane of the board. So there is a certain flux which is linked with this particular area of this circular area, and the magnetic field is coming out of the plane of the board. Now what we are doing is we are basically compressing this wire. We are compressing this wire to make it as a narrow or a thin wire like this. So A dash
B dash, C dash, D dash. We are creating it like this and continuously reducing this area. Now what we are doing is we are reducing this area. We are reducing this area. It means that we are reducing the magnetic field which is coming out from this section of this wire. So the direction of the induced current in such a wire should be such that it opposes this decrement in the field. So it means that the direction of the current should be in the anti-clockwise manner, like A dash, D dash, C dash, B dash. Because when we take this anti-clockwise direction, then the field is in the outward direction, which basically supports the original field, because we have to increase the field. We have to increase the field. We have to increase the field because the field is decreasing. So according to Lenz law, the field should be in the outward direction so as to increase the field. It means that the direction of the current should be in the anti-clockwise direction. तो यहाँ पे जो है सिचुएशन पिछले केस से अपोजिट है. पिछले केस में फील्ड इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड था, यहाँ आउट द प्लेन ऑफ द बोर्ड है. पिछले केस में एरिया बढ़ाया गया था, इस केस में एरिया घटाया गया है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इसको जो है कंप्रेस करेंगे इस वायर को, जब इसके एरिया को हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेजेस है वो घटेंगे. जो एरिया है जिससे कि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है प्लेन ऑफ द बोर्ड से, वो घट रहा है. तो इसलिए लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली इसको जो है, इस जो घटाव है, इस डिक्रीमेंट है, इसको बढ़ाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए ताकि वो उसको सपोर्ट करे, यानी बाहर की तरफ जो फील्ड आ रहा है उसको सपोर्ट करे, उसको बढ़ाए. ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलोंग द इंड्यूस करंट अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगा. इस तरह से वो जो घटे हुए फील्ड है उसको वो सपोर्ट करेगा, उसको बढ़ाएगा बेसिकली. तो यहाँ पे भी जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो पहले वाले पार्ट में हमारा आंसर था ADCB और दूसरे पार्ट में हमारा आंसर है A dash, D dash, C dash, B dash. So this is the whole explanation of this problem. Hope you understand it. Thank you.